देख रहे हैं ये खास साइमलकास्ट ईटी नाउ स्वदेश पर, जहां पर हम मना रहे हैं क्रिसमस। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और And I'm Alex Matthew, and first of all, from all of us here at ET Now and ET Now Swadesh, here's wishing you a very, very Merry Christmas. And the topic today that we discussed, Kavita, is how, Santa Claus, of course, is the one person that everyone looks forward to in this Christmas season. It's the season of giving. But everybody has that one dream that they want to achieve, that one goal that they want. And we were thinking, this Christmas, why don't we help our viewers become their own Santa Claus? बिल्कुल, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्यों ना हम हमारे दर्शकों के लिए सांता क्लॉज बने। लेकिन क्योंकि हम सांता क्लॉज की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो शो पर आज अपने सपने हमारे साथ शेयर करेंगे और हम उन सपनों को पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एलेक्स से पूछना है कि सांता क्लॉज से तुमने बचपन में क्या कुछ मांगा था या अभी भी क्या कुछ मांगते हो और क्या कुछ मिल पाया है? Well, let's just say that right now I'm facilitating the arrival of Santa Claus. Okay. So that is the stage of life that I am at right now. And he's going to be my Santa Claus also today. By the end of the show, I'm going to have my wish. Okay. So I have asked for a lot of things. I haven't got everything that I asked for, but I'm pretty sure that I've mostly been satisfied. ओके, दैट इज नॉट बैड। तो मैं भी इसी की उम्मीद कर सकती हूँ तुमसे आज शो के एंड में। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं एलेक्स, और बुलाएं हमारे आज के मेहमान को। Absolutely. Let's get on board Arnav Pandya. He's the founder of Moneyeduschool, and he's the expert who's going to help all our viewers out with the queries that they have for us. And in fact, let's Arnav take you through the first question, which comes our way from Abhishek Kumar, and he's sending this message to us from Kolkata. Let's listen in. Hi, my name is Abhishek Kumar. I haven't traveled for the last 3 years, but I've managed to save around 1.5 lakh rupees. My dream is to go to an amazing place in Europe and spend at least 2 weeks there at the end of next year. My own assessment tells me that I would need around 4 lakh rupees to make that trip. So what would I need to do in order to save that much money by then? Also, do you know an expert who can tell me what place to visit in this budget? Abhishek, we've got you covered in both those respects, and it's a fact that a lot of our viewers today will be in the same boat because of COVID-19. They've not managed to travel very much. We've got an expert in the travel space as well joining in. Ivana Perkovic, who is a very popular vlogger and also an international business consultant, and who's been all over the place, is helping us with the second part of your question. Ivana, thank you so much for joining in. And 4 lakh rupees is what was set as the budget for a 2-week trip, I think, to Europe. What all can be done with that much money? Honestly, that's quite a high budget, so you can do a lot of things with 4 lakh. I think it's important to take a benchmark. So there are 5 factors which are important for setting any travel budget. The first one, of course, is logistics, like your flight tickets or your visa or trains that you want to take. The second one is accommodation, food, activities that you want to do. And the final one is the season. Especially Europe can be extremely seasonal from about half of June until the end of September. It's high season, which means that the prices can go up as much as 4 times as in low season. So that is the first step that I would want to give to anybody who wants to visit Europe. Go in the low season because it will save you a lot of money. Then I think another important benchmark is, I'm originally from the Netherlands, so I know the country like the back of my hand, and it is usually in the higher benchmark of countries to travel in Europe. So I think it's a good indication of how much money you would need, and any countries below that budget would easily fit the budget that you have mentioned. The daily average budget that you would need to travel the Netherlands, and more known actually Amsterdam, would be $155, which translated in Indian rupees is about 11,700 rupees. Translated into 4 weeks or multiplied into 2 weeks, actually, I think that's what he mentioned, that would be around 164,000 rupees or 1.65 lakh. Now,
if you look at the rest of the European countries, they are usually way more cheaper to travel. So if you kind of keep the budget for the Netherlands in the back of your head, you should be able to visit easily other countries in Europe which are less expensive than the Netherlands. Even, for instance, Germany, France, Spain, Italy are way less expensive than the Netherlands. In terms of a total budget that you would need to travel Europe, in a good mid-size range budget, I would definitely say keep it at 2.5 lakh, including your flight ticket, which you can book months in advance in order to Abhishek get the is best almost prices. within his budget. He has 1.5 lakhs already with him और अब उसको Yeah. लगभग 2.5 लाख रुपए चाहिए अर्नव जी. तो पैसे कैसे बचाने हैं और किस तरह से किफ़ायती ट्रैवल करना है और रहना है यूरोप में, उसका नुस्खा तो बता दिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सेविंग कैसे की जाए. इनका ये सपना जिसके लिए ये 2.5 लाख रुपए और इकट्ठा करना चाहते हैं, ये कैसे करें. 1 साल का समय है देखिए इनके पास, तो ऐसे में समय भी कम है और राशि थोड़ी सी ज़्यादा है. कितना निवेश करना होगा, कहाँ करना होगा? जी, पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी क्रिसमस. अब देखिए, इनके पास ऑलरेडी 1.5 लाख रुपये है, यानी कि शॉर्टफॉल जो उनके बजट के मुताबिक है वो 2.5 लाख है. अब इसमें क्योंकि उनके पास 1 साल का समय है वर्चुअली, तो उनको एक सिंप्लीफाइड स्टैगर्ड अप्रोच में काम करना चाहिए. और मेरे हिसाब से अगर वो 20,000 अ मंथ की बचत करते हैं और इस गोल के लिए अलग रखते हैं, तो उनका टारगेट मीट हो जाएगा. अब क्योंकि इनका गोल बहुत स्पेसिफिक है इन द सेंस कि उनको टाइम पीरियड फिक्स्ड है कि कब उन्हें ट्रैवल करना है, तो इसीलिए ये जो पूरा पैसा है वो उन्हें एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर रिस्क कम हो और उसके साथ लिक्विडिटी भी हो. यानी कि क्योंकि इनके एक्सपेंसेस उनके ट्रैवल के थोड़े समय पहले से शुरू हो जाएंगे और वो हिस्सों में उसे निकाल लेंगे, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि लिक्विडिटी का ध्यान रखा जाए. तो मेरे हिसाब से डेट फंड्स इनके लिए एक सही ऑप्शन है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी भी रहती है और खास करके आप कभी भी उसमें पैसा डाल सकते हैं. तो जो वो रेगुलर सेविंग करेंगे वो वहां डाल सकते हैं. और मेरे हिसाब से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स आगे के समय में अच्छे रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इंटरेस्ट रेट राइज के बारे में हम इंडिकेशन देख रहे हैं, उसको देखते हुए ये प्रकार के डेट फंड्स में रिस्क कम होता है और ये उनके गोल्स के लिए सही होता है. अब फाइनल पॉइंट आता है उनके सेविंग्स पे. तो ये 20,000 पर मंथ उनको जो सेव करना है, उसके लिए या तो वो क्लियरली अपने इनकम में से ये अमाउंट अगले महीने से साइड में रख दे, या एक और अप्रोच भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं, जहां पर अगर उनके पास कोई भी लमसम अमाउंट आता है, यानी कि आपको मान लीजिए बोनस आ गया या सैलरी में इंक्रीज आ गई, तो जो एडिशनल अमाउंट आता है वो उसे डायरेक्टली इस गोल की तरफ रख ले. तो उससे क्या होगा कि उनका जो नॉर्मल सेविंग का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और वो अपने 20,000 का सेविंग जो है वो अचीव कर पाएंगे. That's great news. In fact, this is seeming like the goal is achievable. Achieved, yeah. It is achievable. So, yeah, and so this we've is been actual Santas for Abhishek. absolutely. We can say that. And in fact, that's good news for a lot of other viewers also tuning in. And Ivana, thank you so much for joining in and for those tips and tricks. I'm sure a lot of our viewers will benefit from them. But let's go to the next query that's come in fact, from Patna. And I believe Shrishti has sent us a message. Let's listen into what she's sent us. मेरा सवाल एजुकेशन लोन से जुड़ा है. मैं यूके में पढ़ाई करना चाहती हूँ. 2 साल पहले मेरी जॉब लगी है, जिससे मैंने करीबन 2 लाख रुपए की बचत की है. यूके में पढ़ाई करने के लिए मुझे 40 लाख की ज़रूरत है, जिसमें से 20 लाख रुपए पेरेंट्स दे देंगे, जो मुझे उन्हें बाद में देना होगा. क्या अगले साल तक मेरा यूके में पढ़ने का गोल पूरा हो पाएगा? कितनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या मुझे मेरे गोल को पोस्टपोन करने की ज़रूरत है, या फिर मैं एजुकेशन लोन ले लूँ? अगर मैं एजुकेशन लोन लेना चाहूँ तो कहाँ से लूँ? इंडिया से लेना बेटर होगा या फिर यूके से? All right, this is a very important question, I think, from the perspective of a lot of people that have maybe put their plans for further education, Arnav, on the back burner because of what we've seen over the last couple of years. This, in a sense, has been beneficial because they've managed to save that extra amount. But what specifically should Shruti bear in mind?
So what she needs to do is that first take a look at how much money is the shortfall which is going to come. One thing is very obvious, which is that from her income and savings, it's unlikely that she will be able to meet the remaining requirement, because if you see the total amount required is 40 lakhs, out of which 20 lakhs are already, I mean, she's going to get it from her parents, and 2 lakhs are already saved, which leaves a shortfall of 18 lakhs. So it is unlikely that a large part of this is going to come from her savings over the next 1 year. So the clear and obvious answer to bridging this shortfall is to take a housing loan, is to take an education loan. Now, education loan has several parameters which needs to be taken into consideration, because since this is a foreign education thing, the point is that what all factors would she need to take into consideration, because there are several costs involved with education loan. It's not just the fact that you are going to pay a certain rate of interest. If you look at the current rates of interest which various financial institutions charge, it can be anywhere between 6.5 to 12%. So the kind of entity that you select for the education loan is very important. Second thing is the processing fees, because that is a one-time charge which you might need to pay at the time of taking the loan. The third is that since this is a foreign education expense, it is likely that many institutions will ask for collateral. And collateral means some additional investment which is already there, which could be like, say, a residential property, or it could be fixed deposits, it could be an insurance policy, which the financial institution takes as a security or for the purpose of the loan. So that this also needs to be present, because whatever the loan amount is, you will need to give this collateral as a certain percentage of the loan that is taken. And finally, what you also need to see is who are you taking the loan from, because if the goal is that at some point you also want a tax break on the repayment of the loan, then taking it from a non-banking financial company is not a good idea, because you don't get a tax break there. So if you take it from either a bank, which is a public sector, private sector bank, or a financial institution which is already approved for this purpose, then you get the tax break. And overall, what she also needs to do is look at the time period for which the loan she is taking, because the repayment period can go up to as long as 12 to 15 years, but she should not expand it too much, but keep it to between 6 to 8 years, so that the repayment will start only after her education is over, and then she'll be able to have to repay the EMIs. But she should not extend it too long, because that will only increase the interest cost on it. तो क्लियरली सृष्टि, आपकी सैलरी से पैसे जोड़ पाना थोड़ा नामुमकिन यहाँ पर लग रहा है. आप ये काम कर सकती हैं, या तो अपने गोल को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकती हैं, अपने इन्वेस्टमेंट की जो राशि है उसे बढ़ा सकती हैं, लेकिन लोन तो आपको फिर भी लेना ही होगा. और इसीलिए जो आपको कदम बताए हैं अर्नव जी ने, उस पर आप अमल करें. और जहाँ से भी आप लोन ले रही हैं, ये ध्यान में रखें कि नौकरी मिलते ही या नौकरी शुरू होते ही, जब भी आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करें, उसके बाद लोन का बकाया जितना भी होगा उसको चुकाना शुरू कर दें. We've got another question coming in from Tanishka Digge, and this is from right here in Mumbai, and she's an aspiring vlogger. Let's listen into what her dream is. Hi, my name is Tanishka Dighe. I am an aspiring vlogger and I have always been interested in making movies. So I was thinking if I should buy the iPhone 13 Pro Max. I wanted to ask if it would be a nice option for a camera phone to buy. I currently have 25,000 rupees saved up. So I was thinking if I should buy it on EMI by swiping my card, or if I should buy it with the buy now pay later scheme. Okay, all right. We're going to help you out with that, Tanishka, and in fact quite a few of our viewers that are planning to splurge on tech and digital stuff this end of season. But let's get on board Abhishek Telang, who is the tech expert that we've called on board. Abhishek, thanks so much for joining in. I want to talk about the iPhone 13 Pro Max. And is this the best camera phone out there that you can get? Can you settle for something less costly that will give you a similar quality?
देखिए यहाँ पर आईफोन 13 प्रो से बेटर चॉइस, अगर आपको फिल्म मेकिंग करनी है, कंटेंट क्रिएशन करना है, व्लॉगिंग करनी है, जैसे आपका सवाल है, तो इसके लिए आईफोन 13 प्रो सीरीज से बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो उसके लिए है वो ये कि आईफोन 13 प्रो सीरीज में इस बार दो नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई जो खास तौर पर व्लॉगिंग, फिल्म मेकिंग इसके लिए है। पहली चीज तो ये कि आईफोन 13 प्रो सीरीज जो है वो सिनेमैटिक मोड के साथ आती है। सिनेमैटिक मोड यानी कि जो कैमरे से हम वो 50 लेंस या 35 लेंस के पैनकेक लेंस की मदद से हम जो वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का इफेक्ट क्रिएट कर पाते हैं किसी अच्छे मिररलेस डीएसएलआर कैमरे की मदद से, वही इफेक्ट, वही शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अब आईफोन 13 प्रो सीरीज में सिनेमैटिक मोड दिया गया। इनफैक्ट ये सिनेमैटिक मोड नॉट जस्ट आईफोन 13 प्रो सीरीज में बल्कि जो सस्ते वाले मॉडल है आईफोन 13 सीरीज, उसमें भी आपको सिनेमैटिक मोड देखने को मिलेगा। तो कई और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में कई फिल्म मेकर्स आईफोन यूज करते हैं कई नीश शॉट्स लेने के लिए, जहां पर वीडियो कैमरा, बड़े वीडियो कैमरा या डीएसएलआर नहीं पहुंच पाते, तो उस तरीके से आईफोन 13 को यूज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड फिल्म मेकिंग के लिए। और ये फीचर जो सिनेमैटिक मोड है ये बहुत बढ़िया बनाता है। दूसरा, आईफोन 13 प्रो सीरीज में जो खास चीज दी गई है कि प्रो रेज फॉर्मेट में ये वीडियो रिकॉर्ड करता है। प्रोरेस रेजोल्यूशन वो है जिसमें फिल्म, जो प्रोफेशनल फिल्म्स होती हैं वो उसमें रेंडर होती हैं, उसमें एडिट की जाती हैं। और डॉल्बी विजन तो पिछले साल आईफोन 12 में ही आया था। तो प्रोरेस, डॉल्बी विजन, सिनेमैटिक मोड, ये तीनों चीजें मिलकर आईफोन 13 प्रो मैक्स को सबसे बेहतरीन फोन बनाती है। अगर किसी भी ब्लॉगर को आज की तारीख में फिल्म मेकिंग के लिए, कैमरा के लिए कोई एक फोन लेना है, तो इससे बेटर और कुछ नहीं है। तो बाकी जो मेरे ख्याल से प्रोफेशनली लोग कैमरास वगैरह खरीदते हैं और इस तरह के काम करते हैं, अभिषेक, उनके लिए क्या ये सुंदर, सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है, ऐसा आप कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा कि कई फिल्म मेकर्स अपने साथ महंगे डीएसएलआर कैमरे और प्रोफेशनल कैमरों के साथ साथ आईफोन्स भी रखते हैं कुछ स्पेसिफिक फुटेज लेने के लिए जहां पर बड़े कैमरा एक्सेस करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में आईफोन आपके जो व्यूअर हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। पैसे थोड़े बचाने हैं तो प्रो मैक्स पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्क्रीन साइज बड़ा है प्रो मैक्स में। कैमरे वाइज प्रो मैक्स दोनों सेम है। प्रो जो है वो सस्ता पड़ेगा प्रो मैक्स के मुकाबले, तो ये आईफोन 13 प्रो भी लिया जा सकता है, थोड़े पैसे बच जाएंगे। Absolutely. All right. So that's the view from the tech expert. Let's go to the money expert now. Arnav, I'm coming to you because the question really is about a buy now, pay later option. And this is something that I think is gaining in popularity. Is it a good option to consider? And from the point of view of financial stability and good practice? Yeah, if you look at it in terms of whether you are going to swipe your credit card and then convert the payment into an EMI as compared to the buy now, pay later option, the buy now, pay later option is obviously a better choice. Now, there are a few reasons for this. See, one is that when you choose the buy now, pay later option, for the time period for which you are paying off the installments, there is no interest that is charged to you. Now, only if you default on the payment does the interest kick in. While when you look at something like, say, an EMI on a credit card, the interest is already into the entire calculation when the EMIs are set. So that is one important saving. The second thing is that when you go for a buy now, pay later option, you get various choices in terms of how do you want to structure your payments. So you have that choice available. So depending on what is your capacity to pay, you are able to structure it accordingly. So this becomes an affordable option for you when you are paying off the amount. And the third thing is that there is a lot of choice in terms of whom you can go to in terms of these kind of options. And in most cases, the place or the, say, if you're buying it online, you already get an automatic choice in terms of who is offering you this kind of buy now, pay later options. So the only thing that needs to be considered here is that how much are you going to spend, and when you are setting your repayment schedule, ensure that the amount that you have to repay each month is affordable for you, because you cannot afford to miss a payment. And ultimately, this, if you've taken care of this, then this becomes a cheaper option for you
as compared to somewhere else where you are going to end up paying a वगैरह भी lot हमेशा of. हम ऑनलाइन देखते रहते हैं जो अवेलेबल होती हैं। अभिषेक, आप मैं जानती हूँ कि आप लोगों को टिप्स भी देते रहते हैं समझदारी से कैसे शॉपिंग की जाए। तो अगर आईफोन प्रो मैक्स किसी को ऑनलाइन खरीदना हो तो कहाँ से, कैसे, कितना डिस्काउंट मिल पाएगा, कुछ आइडिया दे पाएंगे आप? देखिए, अब तो आप आईफोन को apple.in से भी खरीद सकते हैं, वहां पर भी ढेरों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो अगर आपको मिलेंगे, अभी ईयर एंड सेल्स जो चल रही हैं इस वक्त ऑनलाइन, वहां पर आईफोन 13 सीरीज के ऊपर भी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं। हालांकि प्राइस ड्रॉप होना इतना ज्यादा अभी नहीं होने वाला है, अगर थोड़ा इंतजार कर सकती हैं तो इंतजार कर लें, क्योंकि आईफोन 13 सीरीज के कुछ मॉडल्स इंडिया में बनने शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही मेड इन इंडिया जो आईफोन्स आएंगे, लॉन्च होने शुरू हो जाएंगे, मार्केट में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके प्राइस में आपको काफी गिरावट देखने को मिलेगी। तो वो एक सही वक्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं तो जो ईयर एंड सेल आएगी या फिर अभी नेक्स्ट मंथ 26 जनवरी के आसपास सारे ही बड़े जो शॉपिंग साइट्स है वहां पर आपको सेल्स देखने को मिलेगी, तो वहां पर आपको काफी डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। Thank you so much, Abhishek, for that, and certainly something our viewers will be happy to hear. On that note, Abhishek as well as Arnav, thank you so much for joining in and for helping our viewers out. And everyone who's tuning in, thank you so much for tuning in. Hope this conversation has been useful to you. Kavita and I are going to talk about Christmas sweets now. I want my gift actually. He promised that he'll be my Santa today on the show, right? Well, so I have a long list of wishes. I will give wishes and I'll give gifts in exchange for cake and what is called perad. It's called guava cheese. We'll talk about that after the show. But that's all we have for you in this edition of the Money Show as well as Money Mantra. It's been a pleasure bringing it to you. Merry Christmas. And do stay tuned.